हेलो स्टूडेंट्स, Adda247 ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है माधवी और आज हम क्लास 11th के इंग्लिश का जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी है हम सबकी लाइफ रिलेटेड भी, क्योंकि अगर हम सब साथ में हैं तो वी बिकम एक्चुअली स्ट्रॉन्गर और द स्ट्रॉन्गेस्ट सो दैट वी कैन फाइट एनीथिंग इन लाइफ। ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता भी है। और इस चैप्टर में जो है हमने यही पढ़ा है कि एक फैमिली है, वो एक ट्रिप प्लान कर रही है जो कि एंटायरली बेस्ड है सेलिंग पे। वो सेल करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे इंस्पायर्ड बाय होम, दे इंस्पायर्ड बाय जेम्स कुक, राइट? दे इंस्पायर्ड बाय हिम, दे वांट कि वो जो कुक हैं वो जिस तरह से उन्होंने टूर किया था, पूरे ट्रैवल किया था पूरे टाइम वर्ल्ड में, उस तरह से वो भी ट्रैवल करें, दुनिया जाने। जैसे सी रूट्स के थ्रू उन्होंने नेविगेशन बताया था, उसी तरह से ये फैमिली भी उतनी इंस्पायर्ड है। बहुत साल तक इस फैमिली ने क्या किया, बहुत सालों तक एक शिप को प्रिपेयर किया अच्छे से, उसमें पूरा ऐसे सब अंडर दी एक्सपर्ट्स गाइडेंस उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वैसे लगाए कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बट जैसे जैसे क्रिसमस का टाइम आया, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, दे थॉट कि कंडीशंस बेटर होगी सी में, बट ऐसा नहीं हुआ। सी में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी। और फिर बाद में क्या हुआ, जैसे उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया 2 जनवरी में, तब उनको लगा थोड़ा बेटर होगा, नहीं, कंडीशंस और बुरी तरह से ख़राब हो गई और धीरे धीरे कंडीशंस जो ख़राब होती जा रही है। फैमिली बहुत प्रेशर में है, बच्चे प्रेशर में है, बट दे आर फाइटिंग, दे हैव नॉट स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम फाइटिंग। एक इन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि वो एकदम से सी ट्रिप चले गए पूरे टाइम सेल करने के लिए। तो नाउ अब जो भी उनके साथ सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उन सबको वो लिटरली फाइट कर रहे हैं अच्छे से। इतना मैंने आपको लास्ट आपका जो क्लास था उसमें समझा दिया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपने इसको लाइक ज़रूर से किया है, शेयर ज़रूर से कीजिए। जिनको भी आपको लगता है आपके फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स जिनको ज़रूरत है क्लास 11th के बच्चों को पढ़ने की, और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे स्कूल के अड्डा स्कूल के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं क्लास, और हम फर्स्ट स्लाइड डिस्प्ले करते हैं। इंजरीज ऑफ सूजन। Sue's head swells, her eyes go black and deep a cut on her arm. On being asked about her injuries, she replies to her father that she did not want to bother him when he was trying to save them. So basically, being such a nice daughter or being such a nice person or an understanding person, उसको इतनी injuries थी, but she did not tell the father because she knew it somewhere that he is actually fighting for the survival of everyone in the family. सब शिप पे हैं, सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर यहाँ पे। और सूजन को यही था कि मतलब वो किसी भी वे में अपने पेरेंट को, अपने फादर को परेशान ना करे किसी भी वे में, और वो कोई बात नहीं, सबको सेव करें, वो काम करते रहे। सो अपनी इंजरीज़ के बारे में भी उसने बिल्कुल भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा अपने पेरेंट को। उसको ये लगा अगर मैं उनको बताऊंगी तो शायद वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान होंगे। आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे, एक छोटे छोटे बच्चे भी इतना मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दे नो दैट कि सिचुएशन वर्स होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई है। बट एज अ चैप्टर सेज दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई व्हेन दे can be together. So now she is also with them, she is also together, she is very strong and she is acting very strong in front of her father who is just trying his best to save his family. Next slide. Desperation to reach the land. Obviously अगर अब इतनी बुरी कंडीशन है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, अब ये कुछ उनके हाथ में तो नहीं रह गया है। अब उनका क्या है, डेस्परेशन। देयर डेस्परेशन इज टू रीच द लैंड। द फैमिली मैनेजेस टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट द बोट। 15 घंटे से वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा सब परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना। नाउ दे व्हाट दे वांट इज दैट they want to reach the land as soon as possible. The water levels are controlled to a considerable level, but they still have leaks below the water line. They decided to rest and work in rotations. अब obviously बात है कि पानी का जो बहाव है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कुछ लेवल्स पे उसको कंट्रोल कर लिया, बट स्टिल अब जो लीक्स हो रहे हैं जगह जगह से वाटर बिलो दी वाटर लाइन, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। पर स्मार्टनेस देखिए, तरीका देखिए काम करने का, रोटेशंस में काम करें, जैसे शिफ्ट्स में काम करते हैं कि अभी पहले 2 लोग उसको कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो 2 टायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद फिर से 2 लोग आएंगे। सो फैमिली इज टुगेदर, इट्स नॉट दैट वन पर्सन इज ट्राइंग टू सेव द फैमिली।
Everybody is trying hard to save the family. So in fact जो rotation में भी काम कर रहे हैं ताकि कोई थके नहीं बुरी तरह से. The wave had left Wave Walker in a considerably bad state. Wave Walker is the name of their ship, right? Since it is not in a condition to make them reach Australia, they decided and hoped to reach the nearest island, Isle Amsterdam, a French scientific base. So they were supposed to reach Australia, but to reach Australia it would take many hours, and their boat right now is not in a condition so that they can reach there. So what they decide ultimately कि जो भी nearest island है हम उसके वहाँ तक पहुँच जाते हैं. So वो Amsterdam पहुँचते हैं. वहाँ पे एक isle करके island है जो कि एक scientific base भी है. Unfortunately, the chances to reach the island are very slim unless the wind and seas subside. अब island तक पहुँचने के लिए भी हवा का बहाव थोड़ा कम होना चाहिए. पानी थोड़ा मतलब जो इतना flow हो रहा है हवा की वजह से, sea जो लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही है तो वो बहुत ज़्यादा कम मतलब सबसाइड वो धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, तभी वो कुछ इनफैक्ट आइलैंड की तरफ पहुंच सकते हैं. Besides, their supporting engine had also been damaged. Now, so the main engine is almost about to damage. Supporting engine is already damaged. So very difficult in the middle of the sea where they are supposed to go. But still they are trying every bit. They are trying very hard to save each other's life. Everybody is supporting each other emotionally and of course physically तो है ही क्योंकि वो rotations में काम कर रहे हैं. Understood till here? See, if you can work hard together as a team, I think you can do wonders in your life. That's what it says. Next slide. January 4th and 5th. After pumping out the water for 36 hours continuously, they take a sigh of relief as just a few centimeters of water is left to be pumped out. अब 36 घंटे कंटिन्यू पानी को बाहर निकालने के चक्कर में मतलब वो धीरे धीरे करके निकालते रहे और अब ऐसा है कि कुछ सेंटीमीटर ही पानी अब बचा है बोट के अंदर एंड दे आर रिलीफ, दे टेक अ साई ऑफ रिलीफ मतलब थोड़ी शांति उनको अच्छा लगता है, बेटर लगता है. They decided to hoist the storm jib as the main mast is destroyed and head towards the supposed location of the island. Having found some corned beef and crackers, they eat their first meal in 2 days. Imagine the condition. वो 2 दिन से उन लोगों ने खाना नहीं खाया. Continuously what they were doing? They were saving their lives. So every life is very important. Your own life is also very important. So you do anything. And because they were all together, they tried for each and everything what they can do to save everyone's life who were there on the boat as a family. 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया and finally they have their first meal. However, the relief is short-lived. कुछ टाइम के लिए वो था रिलीफ, कुछ सेंटीमीटर्स ही पानी बचा था. The weather starts changing for the worse and by the morning of January 5th, they are again left desperate. सोचा इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, अब बेटर हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ. जैसे ही 5th of January हुई, अगेन मौसम, the weather conditions were very bad, the waves were at their peak and everything was devastating. Next slide. Courageous Jonathan. As the narrator goes to comfort the children, he is left spellbound to see the fearlessness of his son. Spellbound मतलब एकदम से he is in a good way he is surprised or shocked. मतलब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. But he was spellbound to see the fearlessness of his son. So उनके बेटे में जो उन्होंने जज्बा देखा, जो हिम्मत देखी, उसको देखकर वो एकदम spellbound हो गए. Jonathan, who says that he does not fear death as long as they are all together. So Jonathan was one who says he does not fear death. उनको मौत से कोई डर नहीं लग रहा है because he is very sure that they until and unless they are all together. This fills the narrator with determination and courage to fight the sea. Obviously, अगर आप as a son या as a daughter अगर ये बात अपने आप पेरेंट को बोलेंगे जब आपको बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये है कि हम सब साथ में हैं तो हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, तो ऐसी जो बातें हैं इमोशनली जो एक डिटर्मिनेशन पैदा करती है टू फाइट अगेंस्ट एनी सिचुएशन.
एक फैमिली होती है, फैमिली भी जब साथ में होती है पूरी, तो अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी योर इमोशनल समथिंग, इट कुड बी योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कुड बी लाइक प्रॉब्लम लाइक दिस विच दे आर फेसिंग, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम, बट देन व्हेन यू स्टैंड टुगेदर एंड ईच एंड एवरी पर्सन इन द फैमिली इज देयर to fight against that problem, the person who is the head of the family, he gets lot of motivation and courage. तो उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ because my family is with me. It's for everyone. Children, you also make sure you always support your parents whenever they need you. Be there for them always. That's the point, and that's what the chapter is trying to tell us. No matter how hard the situation is, but अगर आप लोग साथ में खड़े हैं उनके, आप उनका किसी भी वे में आप जो सपोर्ट कर सकते हैं आप करिए. आप फाइनेंशियल नहीं कर सकते, आप इमोशनल कर सकते हैं तो इमोशनल करिए. But if you are in a problem, you always want your parents or your family members to be there for you. Why do you want them? Because एक support रहता है तो you feel better. You feel emotionally better. So that's what happened with the narrator. Jonathan ने जब बोला he doesn't fear the death because as long as they are all together, तो ये बात बोलना ही इतना काफी था narrator के लिए. Now he is again full of motivation and full of determination to fight against whatever the nature is causing to them. Next slide. The ongoing struggle. He tries his best to protect the weakened starboard side. That evening, the narrator and his wife sit together, holding hands, feeling hopeless and thinking that the end is approaching. Of course, continue weather kharab ho raha hai. They thought, husband wife, though they are all fighting again and again, but still somewhere they were thinking now their end is approaching and they were holding hands. But still with all the moral support that he receives from his children, he continues his एफर्ट्स करने उन्होंने नहीं छोड़े. मन में लग रहा था बहुत मुश्किल है बचना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, सब कुछ दोनों बातें दिमाग में आ रही है. बट स्टिल विथ ऑल हिज मॉरल सपोर्ट ही रिसीव्स फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, ही कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स. फॉर्चुनेटली वेव वॉकर सेल्स थ्रू द स्टॉर्म. फॉर्चुनेटली वेव वॉकर, द बोट, इट सेल्स मतलब वो पार कर जाती है स्टॉर्म को. He works on the wind speeds in order to calculate their exact position. While he is thinking, Sue gives him a greeting card expressing her love, gratitude and optimism. So जब तक वो पूरा try कर रहे हैं, वो wind direction check कर रहे हैं, Sue जो उनकी daughter है Susan, she gives him a greeting card जिसमें बहुत सारा love, gratitude, thankfulness और बहुत सारा optimism मतलब बहुत सारी positivity उसमें दी गई है. All right, so love means lot of love, gratitude means that thankfulness, and optimism means positivity. Though he is not very convinced, he instructs Larry to steer a course of 185 degrees, saying that if they are lucky, they can hope to find the island by the evening. So he says, he's not very sure, but he thinks that now if we've sailed through the storm and if we are lucky enough, then we can sail through the storm by the, we can reach the island by the evening. He then goes to sleep with a heavy heart. Next slide. Ultimate victory as it says here. Fortunately, they sail on and manage to find Isle Amsterdam by evening. On being informed about this, the narrator's joy knows no bound. इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, इतना डेडिकेशन, सब कुछ किया उस चीज़ के लिए, फैमिली का सपोर्ट मिला, बच्चों का स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं. आज अगर आप हैं, आपके पेरेंट्स अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है एंड यू गेट अ चांस टू एक्चुअली सपोर्ट देम, your emotional support is also very important for them, and then some miracle happens. I think obviously that is a thing for joy. So when they reach the Amsterdam on the island, he's just entirely in joy and he was very happy. Jonathan calls him the best captain and the best daddy in the whole world. Jonathan, जो एक बोलता है, he doesn't fear death. He says that you're the best daddy and you're the best captain in the entire world. Soon they get offshore and struggle to reach the island with the help of inhabitants. जैसे वो ऑफशोर मतलब शोर के पास पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल होता है, बट धीरे धीरे वो आइलैंड की तरफ पहुंच गए. नाउ दे आर हैप्पी एंड दे आर सेफ.
Stepping on the lent after such a turmoil fills the narrator's thoughts with cheerfulness and optimistic Larry and Herbie. Supportive Mary, a brave 7-year-old girl who did not want her parents to worry about her head injuries, and a 6-year-old boy who is not afraid to die. Everyone's support, he got his wife's support, he got his family's, the friends' support, and the main support which he got from his children, who were just hardly 6 and 7 years old, and the girl who said, no, don't worry about my injuries, I'm totally fine, and the son simply says, I'm not afraid to die. So this was the thing which actually tells you the main crux of the chapter is basically because they were all together, they were not afraid to die, and this is what entirely the chapter is all about. The title of the chapter completely matches the story. It's a very strong chapter, बहुत ही ज़्यादा emotional chapter है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको एक thought provoking chapter है कि no matter how hard the times are, but when you are together, you can fight for your survival, for your life, or for your financial condition, or for your emotional condition, doesn't matter, but you can fight. Fight for your own good. Chapter is good. I hope you have understood the chapter. Next video, you will get NCERT solutions for the same chapter. If you have any doubts, please clear your doubts. Write on our comment section that, ma'am, we have this problem. This part is not understood. This particular word is not understandable. There is no meaning to that word. Please ask whatever is your query related to the chapter. Feel free to ask at Adda247, your online school. Thank you so much for watching today's class. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करिए, इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए और सब्सक्रिप्शन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें. Thank you so much. Have a great day.